Good morning, students. I welcome all my dear students in the online lecture. So students, how are you all? I hope everyone are fine. Students, we are meeting very long back. Yes or no? Yes. You might be waiting when your English lecture will start. So students, let me inform you that in a week, Friday and Saturday will be your English lecture. Earlier it was 3 days in a week, that is Tuesday, Friday and Saturday. Now there are changes. Only 2 days in a week your English lecture will be there, that is Friday and Saturday. So students, are you all ready for learning your subject English? Myself, Miss Pooja, I am going to teach you English of Standard 2nd. So let us begin with our new lesson in today's online lecture. So students, for learning English, you need to open your English Bal Bharti textbook and carry a pencil in your hand for referring today's online lecture. Students, this is your English Bal Bharti textbook image which is flashing in your mobile screen. Students, those who are having your English Bal Bharti textbook, just open your textbook. We are going to learn a new lesson. And those students who are not having the textbook, kindly refer to the link in the group. There is one link in the group which is sent to you all every day. In that link, Maharashtra State Board, you can just click it and download it from the Play Store. The application will be opened and there you will get the textbook. So those students are not having, they can refer by downloading it, and those students are having, just open your English Bal Bharti textbook. Students, let me discuss in short the syllabus inside the book. This is called your index page. Your syllabus is divided into 4 parts, that is 4 units. Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 4. In our first unit test exam, we have completed Unit 1. Now, in the semester exam, we are going to learn Unit 2. And you have already learnt in Unit 2, 2.1 poem, Chameleons, 2.2 lesson activity time, 2.3 lesson let's speak. Now in our today's online lecture, we are going to learn the lesson 2.4 story time. Unity is strength. So let us begin with our lesson story time. Unity is strength. Students, our lesson number 2.4, Unit 2, Story Time. Unity is strength. So today, in our today's online lecture, we are going to study in Unit 2, 2.4, Story Time. It is a story, as you can see the pictures. So story is very beautiful. The story's name is Unity is Strength. Before explaining you the story, the lesson, I am going to explain you the meaning of the lesson story time. So the name of the lesson is Unity is Strength. Now students, can you all tell me what is unity? Unity means being together, jointly working, being united, being together.
So, as you can see, I'll give you one example. If, for example, a teacher calls one student to hold the book and the books are very heavy, so the one student can't hold the entire book. So there the teacher can, if the teacher will divide the books to carry in 3 students or 4 students, each student will have the burden less and they can hold the book easily. Yes or no? Yes. So when we work in unity, always the work is being done smoothly. So the meaning of unity is एकता in Hindi. बच्चों, unity का मतलब है एकता. Is strength. Now what is the meaning of strength? Can you all tell me? Strength means the power. So in Hindi it is called as ताकत. Strength. Unity is strength. एकता ही ताकत है. इस पार्ट का मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही ताकत है. 2.4 स्टोरी टाइम. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. सो इन आवर टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टोरी ऑफ 4 sons and an old man. An old man was having 4 sons, and then we are going to see what happens in the story. How the 4 sons will get a lesson and what will happen in the lesson we will come to know by learning the story. So let us start. Students, I am going to explain you the story. You will point your pencil in your textbook while I am reading, and also you will listen to the story very carefully. I will explain you the story in both the languages, that is Hindi and English. So students, open your page number. Open your page number 21. Lesson number 2.4 story time. Unity is strength. I am starting the lesson. Just pay attention carefully to the story. Listen, repeat and enact. An old man lived with 4 sons in a village. Now students, in the story there is an old man. He is living with his 4 sons in a village. बच्चों, इस स्टोरी में ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी था जो अपने 4 बेटों के साथ गांव में रहता था. An old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. Worried means tensed. Okay. Students, जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही परेशान रहता था. His sons were always quarreling with each other. Now what is the meaning of quarreling? Students, underline the word quarreling with a pencil and write fighting. Quarreling का मतलब होता है fighting. तो आप quarreling वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए FIGHTING fighting. His sons were always quarreling with each other. अब जो 4 बेटे थे वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे. Students, the old man had 4 sons and he was very worried. Why? Because the sons were always quarreling with each other. The sons were fighting with each other. They would never agree on any point.
एग्री, मतलब वो कभी किसी बात पर सहमत नहीं रहते थे, वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मैनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग। जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने हमेशा बताया था कि हमें फाइटिंग नहीं करना चाहिए, हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम। लेकिन उन चारों बेटों ने बूढ़े आदमी की, उनके पिताजी की बात नहीं मानी। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। वो हमेशा हर चीज़ के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। You can see in the picture, the 4 sons are there. They are fighting with each other and the old man is worried and he is sitting on a bed. बच्चों आप देख सकते हो पिक्चर, ओल्ड मैन जो है, जो फादर है, वो बैठे हैं, बूढ़ा आदमी बैठा है जो कि वो चारों बेटे के पिताजी है। वो बहुत ही परेशान है क्योंकि उनके चारों बेटे आप देख सकते हो पिक्चर में फाइटिंग कर रहे हैं यानी झगड़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी द ओल्ड मैन इज वरीड एज द 4 sons आर fighting always with each other. Now the second paragraph, students. One day he called his 4 sons. बच्चों एक दिन उस बूढ़े आदमी ने, पिताजी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. बच्चों पिताजी ने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें बंडल ऑफ स्टिक्स दिए, मतलब लकड़ी के बंडल दिए और उन्हें कहा कि उन्हें तुम 2 टुकड़ों में तोड़ के बताओ। It's so easy, said the eldest son. उसमें से बड़े बेटे ने कहा कि ये तो बहुत ही आसान है, हम इसे आसानी से तोड़ लेंगे। He took the bundle and tried to break it. उसने बंडल हाथ में लिया लकड़ी का और वो कोशिश करने लगा तोड़ने की। एल्डेस्ट सन मतलब सबसे बड़ा बेटा। चारों सन्स में, चारों लड़कों में सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट सन। He took the bundle and tried to break it. उसने बंडल हाथ में लिया लकड़ी के और वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. अब उसकी जो कोशिश थी वो नाकामयाब हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो बंडल था वो नहीं टूटा और वो सरप्राइज्ड हो गया कि ये बंडल लकड़ी का टूट क्यों नहीं रहा है। He used more force. फोर्स यानी ताकत। उसने बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाई, ताकत से इस्तेमाल किया तोड़ने की, लेकिन वो लकड़ी का बंडल नहीं टूट पाया। He tried again and again. उसने वापस बार बार कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो लकड़ी का बंडल नहीं टूटा। But the bundle of sticks did not break. He gave up. उसके कोशिश करने के बाद भी वो लकड़ी का बंडल उससे नहीं टूट पाया और वो हार गया। Now students, as the old man called the 4 sons, he gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. But the sons thought it was very easy to break the bundle. The eldest son came, he took the bundle and tried to break it. But what happened? He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. He used more force.
He tried again and again, but the bundle of sticks did not break and he gave up. बच्चों, उसके कोशिश करने के बाद भी वो लकड़ी का बंडल उससे नहीं टूटा. अब हम आगे देखेंगे थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ 4 sons. आप इस पिक्चर में देख सकते हो 4 बेटे हैं. उसमें से एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा बेटे ने लकड़ी के बंडल को तोड़ने की कोशिश की. आप देख सकते हो वो पैर की सहायता से कोशिश कर रहा है, बहुत ही ताकत लगा रहा है, बट ही couldn't break. You can see in the picture he is applying much force, but the bundle is not breaking into 2 parts. The next is, then his brothers tried to break the bundle of sticks. They tried hard, but they could not succeed. Now, students, now the eldest son tried. Now the 3 brothers are trying to break the bundle of sticks, but the stick is not breaking. बच्चों, अब बड़े बेटे ने तो कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब हो गया और वो लकड़ी के बंडल नहीं टूटे. अब उनके तीनों बेटे कोशिश कर रहे हैं उस लकड़ी के बंडल को 2 हिस्सों में तोड़ने की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो रहे हैं. Their father smiled and asked them to unite the bundle. Now, the old man smiled at the sons and asked them to unite the bundle. अब जो बूढ़े पिताजी है, जो फादर है, ओल्ड मैन, उन्होंने कहा, हंस के बोला कि आप लोग से नहीं हो रहा है, एक काम करो, इस बंडल को इकट्ठा करो. Now the sticks were separated. He gave each brother a single stick and asked them to break it. बच्चों, अब जो बंडल इकट्ठा किए थे उसमें से ओल्ड मैन ने कहा इसको यूनाइट करो, यानी इसको अलग करो और आप सभी चारों जन एक एक स्टिक आपके हाथ में ले लो. अब बंडल था, उन्होंने कोशिश की उस बंडल को तोड़ने की, लेकिन बंडल में से लकड़ियाँ नहीं टूटी. तो उन्होंने कहा इसे अलग कर दो, सेपरेट कर दो. यूनाइट मीन्स सेपरेट. इसे सेपरेट कर दो और एक एक स्टिक सभी जन लेके कोशिश करो. ईच ऑफ द सन्स टुक अ स्टिक इन हैंड. सभी बेटों ने एक एक लकड़ियाँ अपने हाथ में ले ली. इन नो टाइम द स्टिक्स वेर बेंट एंड ब्रोकन. नाउ स्टूडेंट्स, सी व्हाट हैपेंड. In no time the sticks were bent and broken. It means the stick were easily bent and broken. बच्चों, बिना मेहनत के, बिना टाइम वेस्ट किए वो आसानी से लकड़ियाँ टूट गई. क्यों? क्योंकि वो लकड़ी सिंगल थी, यानी एक ही लकड़ी वो कोशिश कर रहे थे तोड़ने की. Now the next paragraph, a single stick is easily broken. एक अकेली लकड़ी बहुत आसानी से टूट जाती है. If 4 sticks come together, it is impossible to break them. एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, अगर उसी में 4 लकड़ी साथ आ जाए तो वो टूटना मुश्किल हो जाती है. If you are united, help each other and live in friendship, you will be stronger than an enemy. Now students, the old man, the father, told the sons, if you are united and you will help each other and live in friendship, you will be stronger than an enemy. बच्चों, ओल्ड मैन यानी उनके पिताजी ने एक्सप्लेन किया कि अगर आप एक साथ आ जाओ चारों जन
एकता में काम करो, एकता में रहो, चारों जन साथ में मिलकर रहेंगे, फ्रेंडशिप करके रहेंगे तो कोई भी दुश्मन भी तुम्हें हरा नहीं सकता है. बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमॉन्ग योर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, you will be as weak as the single stick in that bundle. Now he told that if you are divided, अगर तुम अलग हो जाओ और अलग होके फाइटिंग करना स्टार्ट कर दो वापस, तो तुम भी कमज़ोर पड़ोगे. जैसे कि एक लकड़ी कमज़ोर पड़ी और आसानी से टूट गई. अगर तुम साथ आके काम करोगे, 4 लकड़ी, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, 4 लकड़ी को तोड़ना मुश्किल था, लेकिन जब एक लकड़ी चारों बेटों के हाथ में दी गई तो उसे तोड़ना बहुत ही आसान था. बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमॉन्ग योर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक एंड दैट बंडल. सो अगर आप अलग हो जाते हो और वापस से झगड़ना चालू हो जाते हो तो उसी कमज़ोर लकड़ी की तरह आप टूट जाओगे. रिमेंबर, so students, you can see in the picture the 4 sons are trying to break and it is easily been broken. So here when the father explains that it is easy to break a single stick, but when you break the 4 sticks together, a bundle, it is hard to break it. So when you are divided and when you start fighting, then it is very weak point and you all might lose. So when you come together, no enemy, or if you work in it together, unity, then no one can defeat you. So he gave an example of the bundle of sticks and he explained his sons as they were continuously fighting. Now the next page, students, come to page number 22. United we stand, divided we fall. Now students, what is the meaning of united we stand? अगर हम एकता के साथ काम करेंगे तो हम हमेशा खड़े नज़र आएंगे, और अगर हम अलग हो जाते तो हम हमेशा गिरेंगे. This is a thought. United we stand, divided we fall, said the old man, giving his sons a meaningful look. तो यही ओल्ड मैन यानी जो फादर है, उनके चारों बेटों को उन्होंने समझाया कि अगर हम यूनिटी में काम करेंगे, यूनिटी में, तो हम खड़े रहेंगे, अगर हम अलग हो जाते हैं तो हम गिर जाएंगे. So he taught the 4 sons a lesson, a meaningful look, by giving the example of the sticks. Now the last paragraph. This time the brothers learnt a lesson. बच्चों, अब जो 4 बेटे थे उन्हें बहुत ही अच्छे से मतलब समझ आया कि अब हमें झगड़ना नहीं चाहिए. They stopped fighting with each other. वो एक दूसरे से झगड़ना उन्होंने बंद किया. They started to work together as a team and that really helped them. वो एक साथ चारों मिलकर काम करने लगे और इसी तरह आगे सफल हुए. So students, in the story time in our today's lesson, we had got a meaningful moral that unity is strength and united we stand, divided we fall. So you can see in the last picture that the old man is standing and the 4 sons are helping in the farm, in the field. So now the 4 sons
were helping each other and they learnt a lesson. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इस पिक्चर में चारों बेटे मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं और इसी तरीके से उन्हें अपने गलती का पछतावा हुआ और वो समझ गए कि हमें फाइटिंग नहीं करना चाहिए. So students, 2.4 lesson number 2.4 story time unity is strength. Now this lesson is completed. I am going to take the exercise of the lesson which is there in your page number 22 in the next online lecture. बच्चों जो exercise है answer the following आप देख सकते हो पेज नंबर 22 में, वो मैं नोट्स नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी. द नोट्स ऑफ दिस लेसन, द क्वेश्चन आंसर्स, द ग्रामर ऑफ दिस लेसन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट as this lesson is also important for the exam. So students, the question answers and the meanings, the grammar I will explain in the next online lecture to you all. So have you all understood the today's story, the today's lesson, story time, unity is strength. So in your homework at your home, you will read the lesson 2.4 story time, unity is strength, and also you will read it 3 times the story and you will write the new words, the dictation words from the lesson in your rough notebook. Students, you all have to write the new words like strength, unity, quarreling, fighting, bundle, break, sons, impossible, together, separated, succeed, remember, divided, friendship, enemy. These all are the new words that you are going to find out from the lesson and you will write in your rough notebook, students. So stay connected in the next online lecture, as the next lecture is also important, as I am going to explain you the continuity, the question answer of the same lesson, and also I will discuss the grammar of the lesson 2.4 story time. So do not miss the next lecture. Stay connected, stay safe. Thank you students for watching today's lecture.